जट द लेजेंड ऑफ मौला जट के पहले ऑफिशियल प्रेस जंकेट पे कराची में कोयल में पूरी कास्ट है. द प्लेस इज बजिंग विद एनर्जी एंड आई हैव विद मी द गॉर्जियस मायरा खान. मैंने गॉर्जियस पे रुकी मैं इसलिए क्योंकि लोग कहते हैं कि मैं जो ना पहले लेट्स गेट आउट ऑफ द सिस्टम कि मैं बहुत बायस्ड हूँ आपके लिए. Really? हाँ, ऐसा नहीं है. मैं बहुत इनसे मुश्किल सवाल पूछने लगी हूँ. And this I wish that journalists were biased. the journalists were biased and when it comes to me, they're not. I don't think so. Not at all. They're biased the other way around. They're anti. Yeah. Anti मायरा खान. Yeah. नहीं ऐसा नहीं है. Okay. ऐसा नहीं है. हमारे साथ है जो बहुत ही मौला जट का जो दिल है ना वो मुखो जट है, राइट? और जैसे उन्होंने खुद अभी कहा थोड़ी देर पहले कि वो कोका कोला हैं जिनसे मौला जट हजम होगी आप लोगों को. Inshallah. कैसी description थी? Inshallah. Look at this. You have to ask Bilal this. हाँ, Have नहीं, you done his आप- interview? You already? just said this. This is Bilal Lashari. Is his line This is his line. कि You आप think वो- I would call myself? कि आप वो कोका कोला हैं जिसे हजम होगी फिल्म. जी. He's constantly giving me these new lines of what Mukho is for the film. हाँ. He's like, you don't understand. Like, it's like Mukho will give you a little bit of, and I'm like, really? Because I haven't seen it. हाँ. So yeah. So, but the best one he ever came up with, apart from the she's the color and then she's the this, and I think he's trying to like say like it's gonna be small, but hang in there. Hang in there. You rock. Yeah, you rock. You rock. But the best thing was when he realized that this one likes her burgers. हाँ. Was that she's like, if the movie is like a meal, like a cheeseburger meal, then Mukho is like Coca-Cola. Coca-Cola. Yeah, you need it. You need it to digest the food. Zalma Coca-Cola पिला दे. Nice segue. I wow. love that. That's a good one, journalist. Huh? Good, na? Good. Myra, Yes. you've done a lot of cinema, mashallah, in Yes. Pakistan, and successful cinema. मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये आपका most ambitious project है so far? Maybe Superstar के बाद? Because Wow, that was a okay. really concrete role. वो Yeah. film was riding on your shoulders. Yes. Maula Jatt is not riding on your shoulders, but you are an integral part of it. और लोगों को जो expectation है कि ओ हो भाई फवाद और माहिरा इकट्ठे, वो आपको उसकी कोई है palpable feel है उसकी या नहीं Not है? at all. नहीं. No. क्यों? I don't know. I don't think that this is a Fawad and Mahira sort of outing. This is an ensemble cast. This is Fawad and Hamza, Umaima, Gohar. Absolutely. हाँ है. All of us coming together. Yeah. I don't feel any pressure as far as me and Fawad to coming together. No, I feel pressure just because of me, It's like even if I'm in this role, which is, however small or supporting it may be, I think that people will be like, either they'll be like, we wanted more of her, or it'll be like, but yeah, I mean, so it'll always be like, this is not me, this is them. They have to carry this movie, and I think they will. And you're a part of it, though. I'm a part of it, and Yeah. I hope I've done my job well enough Yeah. for me to be that heartbeat, Gee. or for me to be that cola, He is Coca-Cola. because that was required of me, Yeah. right? Yeah. Mukho can't be at any point angry or sad. हाँ. Even when she's angry, क्या है मुखो? Mukho is, प्यार. she is a bloody like little flirt. She's a flirt. हाँ. And she's just so obsessed with Maula, Like Maula Jatt comes into the thing and जो मौत का कुआं है, and where he fights, and she's just like, so rooting for him all the time. She's also actually Maula's conscience. Okay. वो जो एक That's लाइन very है ना interesting. जी, हाँ. वो जो एक लाइन है जो ट्रेलर में है जहाँ वो कहती है कि I'm not going to say it because I will suck right now, but basically she's telling him that अगर तुम इन लोगों की जान चाहते हो और मेरी इज्जत चाहते हो तो नूरी नू बोटी बोटी करके बारा. बोटी करके बारा. She tells him, she's this close to him, and she says, then basically, and I love the way, she's मैं just इंतजार कर रही हूँ कि ये डायलॉग पंजाबी में आए जरा. तो खैर नहीं, अभी नहीं आएगा, लेकिन वो कहती है कि मैं चाह रही हूँ कि ऐसी गुफ्तगू सारी पंजाबी करिए. तो आप किसी और को ले आए ना. नहीं,
आपने सुना मैंने कहा I'm a little- Another thing Bilal said to me was, हाँ, पंजाबी नहीं बोल रहे आज. man, Mukho. He also calls me Mukho sometimes. You know, man, Mukho. That dialogue you said in an interview, you know, it's like it's really become a big hit. हाँ. I was like, okay, so but we didn't use it. You know, it's not even like why did you? But then he was really happy. हाँ. I was like, I hope you've not cut it out. Out. But the chalo log like no. हाँ. Yeah, so I'm not going to give another dialogue out. My वही director's वाला not very repeat happy. What? Pakki pakki mashuka. पक्की पक्की मशूका. मैं हूँ ना हाँ. पक्की पक्की. हाँ. बस. ये है लेकिन आपका और जो फवाद का जो इश्क मशूकी है वो नीलोफर के लिए संभाल के रखी हुई है मुझे ऐसा फील हो रहा है. You know, so Maula Jatt is very. I think they've also taken out a few things out of Maula Jatt. But when I was shooting it, I was like, oh my God, is this a bit much? You know, there's a lot of. It's very raw. Yeah. The ishq mashuki is very raw. Nilafar is very pure. Pure. Very Raw and pure. We like the comparison. Yeah. We like the balance between. Yeah, this is very like raw. I shouldn't say dirty. I should because that no, it's No, I don't mean dirty it is in not a that good way. word, Yeah, yeah. that's not what I mean. Is it's Gritty. it's muddy. Like I'm not saying the right word, right? Yeah, this is You're gonna not get going to have a dirty. mud fight with Maula. No. No, but they are like Kabo mein aapke. no, but it's a muddy. You know, it's like हाँ. gaon ka, हाँ. and that's something else. हमारा पंजाबी सबसे बड़ा चैलेंज था या शूट इतना लंबा जो था 1-2 साल तक नहीं, होता रहा. पंजाबी पंजाबी was my was the biggest biggest. हाँ. Punjabi was my biggest challenge. Shooting for so long, and that's not a challenge for me. I Yeah. do it. I do And films. you I do were- it on a regular yeah, basis. yeah. So it's something that I just. And you were doing other stuff alongside. So you were Yes. busy constantly. You hadn't parked your career for Maula Jatt. No, You were doing other things as well. absolutely yes. और वो yes. चलती रही. जी, बिल्कुल. I keep on working. हाँ. पंजाबी थी और दूसरी चीज फवाद gained about 25 kilos for the role. Yes. You did not gain any weight. Listen, I tried. I know you're gonna hate me for this, and you're gonna say, "Oh well, you." I tried. Yeah. I really did. But also, Bilal was like, "It's okay. I don't want you to be that. Like, don't go crazy eating parathas and all of that, because somewhere, Fawad looking big, Yeah. and already for some reason, I don't know why, I look bigger on screen. वो तो it makes you larger than life. Of course. Yeah, but some people don't look. Okay, I feel like, okay. oh well, my directors have told me I look taller and bigger. हाँ. So he liked the idea of this big Maula Jatt with Mukho sort of a little bit, you know. He thought it would look really nice when he, you know, there's a, Yeah. you know. You sent me a message when I said Mahira's Punjabi is making me nervous. And you Yeah. said, don't be nervous. Yes. I may have been nervous, but I also said I cannot imagine anybody other than you playing Oh, Mukho. no, that's not true. absolutely. That's not That true. is absolutely true. I would not have anybody else. That's another thing. That's another thing. I don't think, yeah, I agree with you. Yeah, absolutely. There you go. Yeah, There you yeah. go. I We're think on the that, same page. yeah, I think that, yes. But I'm gonna Mahira, keep good it at luck. that. And Thank you. I've seen bits of the film. You It said you're looks- going to ask me some really tough questions, but you No, haven't. These are the really tough questions. We'll ask you the tough questions after the film. वो भी तो वक्त आना है ना? I watched your interview well in bits. हाँ. इसलिए कि ये cut short. No, Can I it's take fine, it's fine, a it's fine. couple more minutes? No, you don't have to keep this in. No, I'm no, just we saying do, that we do. I watched this interview of hers with, a snippet of Fawad and Fawad talking about me and how his chemistry with me is. Yeah. And I messaged Fawad. I was like, is it really that we argue? Is that why the chemistry is good? हाँ. I was like, you could have said, I'm the greatest actor you've ever worked with. Yeah. I'm the biggest blessing in your life. I was like, what? I was like, let this question come to me. What do you think? Why do you think you have sizzling chemistry with Fawad? Because हम तो बहस करते हैं तो इसलिए chemistry है। नहीं अब असली हकीकत क्या है? नहीं नहीं यही हकीकत है। अब जाहिर बात है उन्होंने कह दिया तो अब आपने भी वही बात करनी है मगर असलियत क्या है? This is it. I think it's God given. It's God gifted यार वो You know, दोबारा नहीं होता. honestly, the truth is that we don't even know what it is. I do think we as actors bounce off each other. Yeah, absolutely. We're not trying. You're not trying. I think that's absolutely. it. I think that's But it. I hope with
Maula Jatt, people will let go of Asher Hussain and Khairat and have a They new. will. They will. I हाँ. think so. But I ये have. तो फवाद ने हमें बता दिया था कि जपियां वपियां हैं. हाँ है. But you know what I have a feeling? Maula Jatt will let go of Fawad and Excellent. me. Yeah. But I think what I have a feeling, and maybe I'm wrong, but I think with Neelufar, it's all gonna be the same. This was Mahira Khan. Thank you. मुखो जट. इस वक्त मैं जट हूँ. अब जाके कुछ नटों को ढूंढते हैं. हाँ. I insist on calling them nuts and they're like, don't call us nuts. Oh, they call themselves nuts. हम नट हैं. मैं कह नहीं अभी तो नट आप लोग nuts ही हैं. Nuts ही हैं. जी. I've heard this question 100 million times. It's been a long role, it's been a long production process. Yeah. We hope that you're ready to let go now, you're satisfied with the final cut. I am. I couldn't be happier, honestly. But obviously, with time, I think it's going to finally hit. Like it hasn't hit me yet because I've been so consumed with this film for this many years. So it's almost like a bittersweet breakup, right? Like it's that stage in my life. Yeah. So, but ये होना था. Like this is, you know. So it did has to you come. park your life for 10 years or eight blinders लगा के bus Legend of Maula Jatt? Yeah. That's all you've done? Yeah. I mean, in the initial couple of years, I did a couple of commercials, but besides that, this has been it. Like this has been it. Or this is your second film after War. Yes. And that was a huge film as well. And I think वो एक turning point था पाकिस्तानी cinema के लिए. Yeah. आपको people are projecting The Legend of Maula Jatt as the second big jump for Pakistani cinema. I hope so because this film is in another league. You know, like I Yes. feel like this is like a big jump from War. You know, Right. like this is. With this, we sort of took things to another level, and which is why it just took that much time and money and effort. So, but finally, it's done. It's finally done. Yeah. And we hope that you won't take another 10 years to make the. I know ये बहुत लोग मुझे कह रहे हैं, but yeah, hopefully not. The question is, should the next one be bigger than Maula Jatt, or should it now just be a smaller, simpler film? What do you feel? I don't know yet. I still I'm waiting for the closure. You know, probably another month Yeah. or so with the release and everything. And I think once my mind like clears up, then I think I'll know. I'm just waiting for the right idea to come. To come. Yeah. You're happy with the cast, of course. Hand-picked cast. Hai. You've got the biggest stars in the country. You've got production is great. You've got stunts coming in from abroad. VFX, special effects. Genre bana hai iska fiction fantasy. Yeah. So we've kind of gone into the dragons and the Game of Thrones kind of a realm. Yeah. Is that correct? Yes, it is. This is a fantasy Punjab. You know, this is not a documentary on Yeah, Punjab. This yeah. is, you know, I wanted to reinvent, you know, the Punjabi film, the Punjabi cinema, and do it my way. You know, and for that, because we've seen Punjab, you know, so many times in Pakistani films and Indian films, and I felt like visually, now we've seen it all, and to make this much bigger, now we need to, you know, just expand the canvas, and that's why it had to be in fantasy. It had to have that sort of period feel to make it larger than life, and I think it's going to feel like a very new, fresh Punjab in a parallel universe. You Absolutely. know? So, Challenges hain aapke. The film is in Punjabi. Yeah. It's violent. It's an action thriller. Yeah. People are expecting to see a lot of Fawad and Mahira together. वो आप नहीं देने वाले बहुत ज़्यादा. थोड़ा ऐसे कंजूसी से आपने दिया है. It's Noori and Maula's story primarily. Yeah. It's gritty and it's dark. Yeah, it is. It is. Does all of this make you nervous? No, it excites me. It will be shocking for people. I feel like some people will really absorb it right away, and some people will take some time because it's so unlike anything we've seen, you know, from a Pakistani film. So it's very original and it's intense, it's engaging. So इतनी light film नहीं है. But at the same time, ऐसा भी कोई नहीं है कि वो कोई दिल खराब हो मतलब they're going to like really be entertained, and
and बगैर enjoy गानों the performances. एक होता है ना कि एक होती है कि अच्छी एक्टिंग होती है और एक होता है performance. I Right. feel like all the actors, all the characters, उन्होंने अपनी you know, they've given performances, and it's not a question of कि उसका रोल ज़्यादा था या उसका कम था या क्या था. Everyone has a part to play in the film, और वो उन्होंने बहुत passionately और बहुत अच्छा उसको किया. So आपने गाने क्यों नहीं दिए फिल्म में? एक गाना आपने दिया है कि कंजूसी से वाई वो पंजाबी भी फिल्म और हाँ बगैर उसको भी गानों गाना उस तरह नहीं कह सकते. वो भी परफॉर्मेंस हाँ, एक है ना. See, I wanted it to just be a completely different style, like something you just don't see coming. It's completely different. It's unexpected, and it's based more on the Western, you know, जो structure एक Right, है एक right. film का, and not the Bollywood musical, you know, या Lollywood musical. So I felt like वो गानों से ना break लगती जाएगी story को, उसके momentum को, उसके Right. rhythm को. So it's not that kind of a film. But that said, जो एक नई चीज़ इस बार मिलेगी, that will be जो फिल्म का स्कोर है, जो म्यूज़िक है, वो एक अलग लेयर है. एंड आई इट्स सो डिटेल्ड, उस पर इतना काम किया हमने ऑन द साउंड एंड द म्यूज़िक कि वो आपको ना वो एक हॉलीवुड फील्स आएंगी उसमें. This is somebody who's really passionate about it. Super, yeah. So yeah. Amazing. that's- Up last on a concluding note, you called Mahira Khan the Coca-Cola of the film. I'm sure you heard. Yeah, we did. Why did you call her the Coca-Cola of the film? Well, what I meant was that it's a very dark and intense film, right? Yeah. और सारे characters ना वो हैं बड़े intense, and Mahira is you know, I like to call her the counterweight of the entire film, right? So she has the most difficult job because she has to be that to cleanse the palate every now and then. Um, along with a couple of other characters as well. So Mahira से जब शुरू में बात हुई तो you know, when I was trying to explain her place in the film in this mix of like all these intense characters, so I said कि you are the Coca-Cola of the film, and she said, well, what does that mean? I said, well, when you go to have a meal, you know, like you're thinking about the burger and the fries, let's say, right? कि यार मैं अच्छा बर्गर खाने जा रहा हूँ या मैं फलानी चीज़ खाने जा रहा हूँ. You don't think about कि मैं कोका कोला पीने जा रहा हूँ. But if उसके साथ अगर आपको कोका कोला नहीं मिलेगी ना, तो आप वो enjoy नहीं कर सकते. Right. Like it's going to be too much, too intense, too salty, it's going to make your mouth dry. You need that sip of Coca Cola. Right. You know, so that's what I meant. when Of I course, said- we know what you meant. She's the fizz. Yeah, She's yeah, the yeah. fizz to the film. Yeah. Absolutely. But good luck. Thank you. You know how anticipated it is and how highly anticipated. हम बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. Yeah. और catch you after the film. Yeah, yeah. Absolutely. दोनों ने अपनी आवाज़ की बेस जो है ना वो थोड़ी थोड़ी डीपर कर ली है क्योंकि अब ये नूरी और माखा मोड में चले गए हैं. ऐसी बात ही है ना. और मैंने सिर्फ जो है वो इजहार यकजहती के लिए ग्लासेस पहनी हुई है, ये मेरी नहीं है. हाँ. ये अपना Guys, congratulations. Finally, I think Bilal is ready to let go of Maula Jatt. ऐसा लग रहा है? देखें अभी भी शोर नहीं है. हाँ. अभी 13 तक वक्त है. कुछ पता नहीं कुछ भी हो लास्ट सकता खुदा है. खुदा ढालो थोड़ा जितना. वो डीसीपी के अंदर यार ये एक छोटी सी चीज है. हाँ. तो जब तक लग नहीं जाती फिल्म तब तक अब कुछ शक नहीं नहीं कह है, सकते. बट उम्मीद ये है कि हाँ. नहीं लग जाएगी. और इस पे जो डिलेज एक तो हमारी तरफ से आए होंगे, डेवलपमेंट में बहुत डिलेज थे. Right. ऐसे कि ज़्यादा डिलेज एक्चुअली फिल्म के शूट शुरू होने से पहले थे. स्टोरी, स्क्रीन जी. प्ले, कास्टिंग, सेट कैसे होंगे, वो सारा मसला. शूट में इतना टाइम लगा नहीं, 1.5 ही लगा. उसके बाद फिर वो डिलेज आए जो हमारे कंट्रोल में नहीं थे. कोविड आ Right, गया. right. अभी भी व्हेन वी आर अबाउट टू रिलीज इट, मुझे ये लगता है, अब ये मेरा ज़ाती ओपिनियन है कि सिचुएशन आइडियल नहीं है. बदकिस्मती से एक तो पॉलिटिकल सिचुएशन है, जी. एक धरना दोबारा आ रहा है अराउंड दैट हमजा टाइम. पॉलिटिकल सिचुएशन तो 70 साल से ठीक नहीं है. यार हाँ, वो बस एक है अनरेस्ट वाली जी. सिचुएशन. फिर फ्लड्स आ गए. Yeah. एक ये भी था कैंप कि यार हम डिले कर दें इसको, जी. बट वो हमारा बहुत इरिवर्सिबल नुकसान हो जाता. जी बिल्कुल. बट इसके हमने वी मेड श्योर कि वी कंट्रीब्यूट इन दैट.
Absolutely. कि पहले दिन की सारी और प्रोसीडिंग्स ये बड़ा अच्छा initiative है। हाँ, वो पहले बिल्कुल, दिन की सारी absolutely. प्रोसीडिंग्स फ्लड विक्टिम्स को जाएंगी। जी। सो आइडियल पाकिस्तान में तो हालात कभी नहीं होते। कुछ डिलेज हमारी वजह से थे, लेकिन कुछ कोविड की वजह से थे बिल्कुल, ऐसे ऐसा ही है, हालात। ऐसा ही है। बट व्हाट आई एम हैप्पी अबाउट इज देखिए कुछ प्रोजेक्ट्स आते हैं बहुत डिले के बाद जो मतलब मेन स्ट्रीम होते हैं लेकिन आराम से होते हैं project। ये प्रोजेक्ट डिले हुआ है जी। बट आई डोंट माइंड इट बिकॉज दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट टू कम आउट Absolutely, ऑफ पाकिस्तान। इसमें बड़े माइलस्टोन्स हैं जो आपने कुछ साल पहले अनाउंसमेंट की थी कि मैं शोबिज छोड़ रहा हूँ और जब तक कोई ऐसी चीज नहीं होगी which is really close to me. So I'm assuming a very violent Noori is close to you. Please, Nice twist to the question, I would say. नहीं Nice twist to the question. किसी ने कहा रेपिस्ट, मैं कहा नहीं रेपिस्ट नहीं 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 rapist नूरी नहीं। नहीं वो ये ज्यादा evil है। ये तो है ही evil ना। ये मूवी माखा के ना- अंदर माखा- नहीं, but Maka owns up to the evil. Yeah. he's Like, I'm a brat in the You're a film. What are you brat. talking अगर about? कोई I'm the असलन youngest. evil इंसान है पूरी मूवी में तो वो माखा है। वो Maka है। तो वो इतना evil है कि even मतलब don't मैं give ना away. असल जिंदगी में थोड़ा सा अब इससे घबरा के बैठता हूँ साइड पे कि यार अच्छा, लेकिन फिर भी आप ठीक है गुस्सा तो नहीं आ रहा आपको? ओरिजिनल चल में ना, माखा पानी पी लें थोड़ा आधे सा। घंटे से ज्यादा जीता नहीं है। So I'm assuming he doesn't die. ओरिजिनल मूवी के अंदर तो आधे घंटे से ज्यादा नहीं जीता। नहीं That's जीता, true. yeah. लेकिन वही वाली मैं बात देखी है। वही वाली बात कि ये इस फिल्म के किरदारों के नाम जी। शायद वही हैं लेकिन फिल्म बिल्कुल डिफरेंट है। हाँ। सो इसके अंदर माखानत का जो किरदार है और जो इसकी ड्यूरेशन भी है Right. वो काफी ज्यादा नहीं, आप- पिवटल है फॉर द फिल्म। नहीं आपको कहना चाहिए उसमें तो आधे घंटे में मर जाता है। इसके अंदर जो मैंने परफॉर्मेंस दी है उसको मैंने अमर कर दिया। माखा कभी नहीं मरेगा। और माखे को कोई मार नहीं सकता। माखे माखे नु जरा पंजाबी में प्लीज। माखे माखे नु नु मार खाना मारे। ये तो इमरान खान लग It's रहा है। kind of true actually. But in a way it is. It is. Let's It not is. give too हाँ, much away. हाँ, Right. But ये फैक्चुअल है। So you have लेकिन मैं एक बात और क्लियर जी। कर दूं। एक तो जो मैंने वो 4 साल पहले वीडियो बनाई थी मुझे लगता है किसी ने देखी नहीं। और बस वो एक बिकॉज इस्लाम और आर्ट इतना एंटी थीसिस है आपस जी, में जी। कि वो ऑटोमेटिकली ज़ूम कर लिया छोड़ जी। दिया। मैंने ये नहीं कहा था। मैंने कहा था वीडियो बनाई थी पूरी कि आई एम टेकिंग अ वेरी लॉन्ग ब्रेक जी। बिकॉज द इस्लाम आई हैव कम टू एग्री विद एज अ मैसेज ऑफ गॉड। उसके अंदर किसी किस्म के आर्ट के ऊपर अल्लाह ताला को कोई एतराज़ नहीं जी। है, ना वो पाबंदी लगाते हैं। अलबत्ता कुछ दायरे मुकर्रर किए हैं अल्लाह ताला ने और वो चाहते हैं कि उनके बंदे उन दायरों के अंदर रह के सारे काम करें, बिजनेस करें, आर्ट करें, जो दिल करता है करें। कुरान और हदीस में भी जो बात आई है वो आर्ट की गलत इस्तेमाल के बारे में है जब आप उसको कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। जी। तो इसलिए आई वाज टेकिंग अ लॉन्ग ब्रेक क्योंकि खुदा के मुतल्लिक जो जिन सवालात का मुझे जवाब कंक्लूसिवली मिला मैं उसकी डिटेल जानने के लिए वक्त दरकार था। बिल्कुल। तो 3-4 साल मैंने गांधी साहब से पढ़ा। जी। लॉट ऑफ जो सेल्फ सेटिस्फाइंग स्टडी Right. जो है वो Of course. राइटिंग अ स्मॉल बुकलेट ऑन इट जी। एज वेल बट इट वाज अ ब्रेक। बट बदकिस्मती से वो इतना ओवरवेलमिंग तासुर है हमारे माशरे में कि इस्लाम का मतलब तो है कि आर्ट ही ऐसी की तैसी हर तैसी, तरह है right. कि वो उसको फिर यही वो समझ जी, के जी। बड़ा नहीं, आपने कुछ वैसे एम्बिगुअस स्टेटमेंट दिए थे लेकिन वो जब हम 1-to-1 बात करेंगे तो मैं आपको पूछूंगी। हाँ यार इनका रिएक्शन बड़ा अच्छा होता है मेरे हर सवाल पे। नहीं वहाँ जाके ऐसे ना तो आप वेरी लॉन्ग ब्रेक इसको 4 साल हो गए अभी Absolutely. भी। ये प्रोजेक्ट तो वो है कि जो किए हुए भी इसको माशाल्लाह बचपन में खत्म किया था ये प्रोजेक्ट। मतलब कि शादी हो गई, बच्चा पैदा बच्चा हो हो गया इनका, हाँ। दाढ़ियां सफेद हो गई, हाँ। ठीक है। सो ये तो हमारा का बच्चा पैदा हो हमारा का गया। बच्चा पैदा हो गया, एक जिंदगी गुजर गई, ये तो वो है। गाइस सबसे बड़ा चैलेंज क्या था मौला जट को लेके अदर देन द टाइम एंड द सर्कमस्टांस? हमने सुन लिया सर्दी की छूट, गर्मी की हाँ, छूट, हाँ। धुंध, ये वो हर चीज। हाँ। तो अब चैलेंजेस क्या थे? यार आप दोनों पंजाबी बोल, आप तो बोल लेते हैं, हाँ, आपने दोनों सिखाई बोल सबको। आप मैं भी लाहौरी, आप भी लाहौरी, चंपल तो लाहौर की, पंजाबी तो फिर कोई मसला नहीं। कोई कतन नहीं, नहीं नहीं, जी। पंजाबी का मसला नहीं है। हाँ, शायद हम दोनों को ही नहीं मसला था, बाकी हाँ। सारों को। बाकी सारों को जी। नहीं, डिलेज सबसे मेरे ख्याल से अच्छा ओके आई मीन लाइक आपने तो और काम किया है बीच में। हाँ जी, मैंने बिल्कुल काम बिल्कुल। किया, मैं बिल्कुल काम कर रहा था क्योंकि एक तो ड्यूरेशन बहुत लंबी थी शूट की। यूजुअली फिल्में इतनी लंबी शूट होती नहीं है। वो जो भी सर्कमस्टांसेस थे वो तो सबको पता ही है। लेकिन मेरे ख्याल से सबसे बड़ा अनदर रीज़न फॉर डिले आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट विद इट कि बिलाल का परफेक्शनिस्ट टू द बिल्कुल। टी होना, Yeah. ठीक है, टू द टी कि मतलब कि इतना परफेक्शनिस्ट होना भी कभी कभार थोड़ा सा अलार्मिंग होता है। सो ही वाज डूइंग बिकॉज उसने अपनी ज़िंदगी के 10 साल दिए हैं, बिल्कुल। ठीक है ना। हम लोग तो फिर भी काम कर रहे थे, जैसे इसने कहा कि ये बुकलेट लिख रहा था, मैं बाकी काम कर रहा था।
बाकी सारे एक्टर्स बिल्कुल। सब लोग। वाहिद बिलाल था जो कि टोटली इन्वेस्टेड था, आई मीन इस मूवी के अंदर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द जेनेसिस ऑफ द आइडिया Absolutely. टिल द रिलीज ऑफ द बिल्कुल। सो उसका इतना परफेक्शनिस्ट होना, नो डाउट कभी कभार मैं अपने लिए बोलूँगा, ठीक है, थोड़ा सा लगता था कि अच्छा ठीक है जाने देना यार, क्या हो गया, Yeah. लेकिन वो नहीं जाने देता था। और आज उसकी वजह समझ में आती है जब आप फाइनल प्रोडक्ट देखते हैं और आप कहते हैं ओके, Yeah. I mean, he But was I making hope sense. he's not a 10-year director कि अब वो एक मज़ीद 10 साल लगाएं अगली फिल्म के Rome लिए। wasn't built in a day. Well, I mean, okay. हाँ हो सकता है अगले दफा 10 साल में लगाए 15 भी लगा सकता है। हाँ, रास्ता है। हो सकता है कि हमारे बच्चे अब बिलाल की फिल्म जी, में अगली फिल्म लेकिन पे। यार मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल वो परफेक्शनिस्ट है, लेकिन वो उसकी परफेक्शनिस्ट पे कहता है क्या सोने पे सुहागा, हाँ जो है वो हाँ। ये है कि उसको फिर वो काम भी करने पड़े जो यूजुअली एक प्रॉपर बजट के साथ जब लोग फिल्म बनाते हैं तो वो एक 20 बंदों की टीम काम करती है। Right, right. एडिटिंग हो गई, वीएफएक्स हो गए, एवरीथिंग जो एक टीम काम करना चाहिए जिसके ऊपर वो एक सिंगल इंडिविजुअल को वो काम करने पड़े, दैट इज बाउंड टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। Yeah. सो इसलिए मेरा ख्याल है वो अगली फिल्म जो करेगा ही इज आल्सो टायर्ड ऑफ इट कि यार Yeah, मैं yeah. 50 बंदों का काम अकेला कर रहा हूँ। Absolutely. इवन दो कि दिस इज पाकिस्तान's biggest budgeted film, बट फिर भी हमारा बजट कंपेयर टू हॉलीवुड या बॉलीवुड इज Of प्रॉब्ली लाइक course. 10%। Of course. तो उसमें उस तरह की टीम्स हायर नहीं हो सकती। सो आई थिंक बिलाल भी इज सिक ऑफ इट, टायर्ड ऑफ इट, एंड नेक्स्ट फिल्म दैट ही वर्क्स इन उसने यही कहा यार कि अब मैं प्रॉपर टीम्स के साथ काम करूंगा भाई। मतलब कि अगर मौला जट की आप टीम देखें ना बिहाइंड द कैमरा, तो कितने लोगों की लगता है ना कि इतनी बड़ी मैग्नम Yeah, ओपस yeah, फिल्म yeah, है yeah. तो बहुत बड़ी टीम होगी, हाँ। सिर्फ 2 लोग, बिलाल और हमारा। नहीं बाकी भी है। आप लोगों ने अपने stunts खुद किए because it's action heavy, right? हाँ एक्शन है, और भी टीम है इसमें शक नहीं है कि जैसे शयान कैमरे के ऊपर है, एक्शन समीर है, समीर है, हाँ। देयर आर टीम्स, लेकिन जो हाईलाइट हम कर रहे हैं वो ये है कि वो काम जो Of जनरली course. एक बड़े क्रू बड़ी- में एक हाँ। टीम जी, करती जी, है जी, वो जी। इंडिविजुअल्स को जी, इधर जी। करने पड़े थे, एंड दैट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। एंड एक्शन की जैसे टीम थी, हाँ। बाहर से बुलाई, उन्होंने यहाँ पे भी लोगों को सिखाया, हमें भी सिखाया, एंड इट वाज अ वेरी न्यू एक्सपीरियंस बिकॉज Exactly. हम एक्शन के लिए वी नॉट नोन इन द वर्ल्ड। हमारा Yeah. एक्शन ज़्यादा ये था वो मुक्का मारे बंदा Yeah. ऐसे कर रहा था जाके, वो बड़ा एक यूनिक हाँ, एक्सपीरियंस हाँ, था। नहीं, ओरिजिनल में भी ऐसा ही है। और जो original मौला जट है ऊपर उसमें से ऐसा जिस ही है। तरीके की यू नो वेपन्स के साथ यू नो कोरियोग्राफी है, सारी फाइट कोरियोग्राफी इसके अंदर वो बड़ी अनयूजुअल है फॉर अ पाकिस्तानी फिल्म। सो वो एक एक्चुअली बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस था कि हाउ टू परफॉर्म एन एक्शन स्टंट, ठीक है, एक्शन सीक्वेंस विदाउट एनी यू नो किसी को चोट ना लग जाए और प्रिकॉशंस के साथ while making it look real. Right. So वो एक बड़े मजे की लर्निंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि इस तरह की चीज़ें एज हमजा सेड कि भाई पाकिस्तान में होती नहीं है। बिल्कुल। So बड़ा मज़ा है, और स्टंट डबल्स थे कुछ जगहों पे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द स्टंट्स सारों ने खुद ही खुद ही किया है। अब वो That's करते थे कि amazing. जो हम ह्यूमनली That's कर quite नहीं amazing. सकते, यानी 2 दफा बैक फ्लिप तो अब हाँ